अब बात करते हैं पार्ट 2 की। ओके, पार्ट 2 में हम बात करेंगे अबाउट दी सेक्शनल टेस्ट की। तो बात कर रहे थे सेक्शनल टेस्ट नंबर 7 है ये, सेक्शनल टेस्ट नंबर 7, जिसमें हम बात कर रहे थे कि इसके यूनिट नंबर 7, 8 और 9 की, पेपर नंबर 2 एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंपेयर द 5th schedule and 6th schedule of the constitution, है ना। 15 मार्कर से 200 बार हमको लिखना है। तो आंसर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो 5th and 6th शेड्यूल जो है ना, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ ट्राइबल एंड देयर राइट्स ऑन रिसोर्सेज जो उनके पास हैं। दी बेसिक thrust of 5th and 6th schedule, 5th and 6th schedule of the constitution is protection of cultural distinctiveness of the tribals and their rights on resources. Okay, is the protection of cultural distinctiveness. और हम बात करें डिफरेंस बिटवीन दी 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंस बिटवीन 5th and 6th शेड्यूल। जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल जो है वो हमारे पास आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में मेंशन्ड है। एंड 6th शेड्यूल है वो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के अंदर बात की गई है। जो ट्राइबल एरियाज हैं अंडर द 5th शेड्यूल आर नोन एज द शेड्यूल एरियाज, एंड ट्राइबल इनहेबिटेड एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल आर नोन एज ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल inhabited areas under the 5th schedule are known as schedule areas, and tribal inhabited areas under the 6th schedule are known as tribal areas। ठीक है, मतलब 5th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज होते हैं, 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज होते हैं। ओके, तो एक डिफरेंस हो गया। और क्या है भाई? इट इज़ क्लियरली इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इवन इफ एन एरिया इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल डोमिनेटेड एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्राइबल एरिया इफ 6
schedule provisions to be six schedule provisions to the constitution is not enforced in that area। मतलब अगर किसी भी एरिया में, अगर सपोज यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे 100% लोग भी यहाँ पे ट्राइबल हैं, तो इसको ट्राइबल एरिया नहीं कहेंगे, इसको ट्राइबल एरिया नहीं बोलेंगे। ट्राइबल एरिया असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय के अंदर ही हैं भाई, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ clearly incorporated in the Constitution of India that even if an area is exclusively tribal dominated area, it cannot be called tribal area if six schedule provisions to the Constitution of India is not enforced in that area। अगर सिक्स शेड्यूल वहाँ पे इन्फोर्स नहीं है तब तक हम उसको क्या नहीं कहेंगे, ट्राइबल एरिया नहीं कहेंगे। जो सिक्स शेड्यूल एरिया है कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल है भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है ना। एंड गिवन ट्राइबल पीपल फ्रीडम टू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स थ्रू ऑटोनोमस रीजन्स एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। मतलब जो सिक्स शेड्यूल है वो पर ज़्यादा ही प्रोटेक्शन है भाई, यहाँ पे ज़्यादा ही प्रोटेक्शन है, ज़्यादा ही प्रोटेक्शन है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे जो रीजन्स हैं क्या बोले, ऑटोनोमस रीजन्स, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। द सिक्स शेड्यूल applicable in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram gives tribal people freedom to exercise legislative and executive power through autonomous regional council, autonomous regional council and autonomous district councils and autonomous regional councils कहाँ पे होंगे भाई, सिक्स शेड्यूल के अंदर। जो फिफ्थ शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू ऑल द आइडेंटिफाइड ट्राइबल रीजन, जैसे कि हमारे पास छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल रीजन है, झारखंड के अंदर ट्राइबल रीजन है, तो वहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल चलेगा। तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, ट्राइबल एरिया बोलेंगे, शेड्यूल एरिया बोलेंगे, शेड्यूल एरिया बोलेंगे, ओके। एंड यहाँ पे क्या होते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होते हैं स्टेट के अंदर, जिससे वहाँ पे क्या करना है वो हमको बताना है। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या होगा भाई, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होगा, सॉरी फिफ्थ शेड्यूल में क्या होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होंगे। एंड सिक्स शेड्यूल ज़्यादा ही यहाँ पे अपने पास ज़्यादा ही प्रोटेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगे, ओके। नाउ जो फिफ्थ शेड्यूल है, इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल दी अदर identified tribal regions except Assam, Tripura, Mizoram and Meghalaya। Identified tribal regions
guarantees tribal autonomy and tribal rights over land through a, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल in each state. ओके, यहाँ पे एक और डिफरेंस ये है, while executive power of the union extend in schedule areas, मतलब जो schedule 5 के जो हैं उनके बारे में, उनके अंदर with respect to their administration in 5th schedule, the 6th schedule areas remain within executive authority of the state, मतलब सिक्स के एरिया में क्या चलेगा, स्टेट की पावर चलेगी एंड यूनियन का जो पावर है वो शेड्यूल 5 एरियाज में भी एक्सटेंड करता है। ठीक है, सो ये मेन डिफरेंस हो गया। कंक्लूड करेंगे यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ यार जो 6 शेड्यूल है वो ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रहा है एज कम्पेयर टू 5th शेड्यूल। अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट वाला लिख सकते हो, बट यहाँ पे ज़्यादा चाहे तो लिख सकते हो वरना ना तो लिखो कि जो 5th एंड 6th शेड्यूल में हमको अमेंड करना है तो हमको करना चाहिए, हमको दोनों हाउस में पास होना है ना, हमारे पास जो रूल है वो पास होना चाहिए दोनों हाउस में ना, आर्टिकल 368 के अंदर। आउटसाइड इसको आर्टिकल 368 कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट thus 5th and 6th schedule offers different levels of autonomy to the tribal population। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द रोल ऑफ NGO इन एजुकेशन। आंसर लिखेंगे भाई एंड स्टार्ट करेंगे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द डाइवर्सिफाइड नीड ऑफ द कम्युनिटी। ऐसा मैंने नहीं, ऐसे चांद कमेटी ने कहा था 1991 में। नॉन गवर्नमेंट organization are viewed as supplementary and complementary organization, मतलब it is supplementary as well as complementary to deal with the diversified need of the community, चांद 1991। okay, कुछ NGOs ऐसे हैं that started residential school but the effective or impact of such school is debatable, and another strategy adopted to by a set of NGOs is to set up alternative schools which provide the education that is appropriate for the targeted tribal groups। तो यहाँ पे लिखेंगे that
some NGO organization have started residential schools, but the effectiveness or impact of such school is debatable, है ना। कुछ अदर स्ट्रेटजी जो इन्होंने अपनाया वो क्या था भाई, ये कुछ ट्राइबल पॉपुलेटेड ग्रुप को ही यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अनदर स्ट्रेटजी adopted by a set of NGOs is to set up alternative schools which provide the education that is appropriate for the targeted tribal group. Okay, इसके बाद since these are non-residential school they can cater only to small set of children who live nearby. इनका ये दिक्कत है कि ये जो स्कूल्स है ना, ये रेसिडेंशियल स्कूल्स नहीं है, तो आसपास के लोग यहाँ पे पढ़ पाएंगे क्योंकि रहने की सुविधा नहीं है ना यार। सो सिंस दिस आर नॉट रेसिडेंशियल schools, they can cater only to a small set of children who live nearby. अगर हम केस स्टडी की बात करें तो एक केस स्टडी है भाई, है ना, शिक्षांधन, शिक्षा आंधन। शिक्षांधन ने क्या किया, लर्निंग मटेरियल डेवलप किया इन ट्राइबल लैंग्वेज लाइक सौरिया, देशिया एंड जुआंग ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर, है ना। इसने मदर टंग में यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी। शिक्षांधन, शिक्षा सदन और शिक्षा संधान के शिक्षा संधान, नॉट माई पहले जो बोला था गलत है भाई, ये सही है। शिक्षा संधान हैज़, और शिक्षा संधान हैज़ डेवलप्ड एजुकेशनल लर्निंग मटेरियल इन ट्राइबल लैंग्वेज। कौन कौन से ट्राइबल लैंग्वेज में, सुरा, दिशा एंड जुआंग। ये जो ट्राइबल लैंग्वेज है मयूरभंज के अराउंड बोले जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स इट स्टार्टेड, हमको बात करनी रोल ऑफ एनजीओस इन
ट्राइबल एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे जो एजुकेशन वाला पार्ट हम बात कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी की, तो यहाँ पे ट्राइबल इंडिया की बात कर रहे हैं जीएस पेपर 2 मतलब पेपर नंबर 2 में। तो वहाँ पे हमको बात करना है रोल ऑफ एनजीओज इन दी ट्राइबल एजुकेशन। ओके, सो इट स्टार्टेड मदर टंग based schooling for the children from the Kola tribe in a block in the Mayurbhanj district in 2011। ओके, तो ये केस स्टडी हो गया। एंड यहाँ पे एमएलईज बनाए जाते थे। एमएलईज का मतलब क्या है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। एमएलई टीचर्स रिक्रूट किया जाता था, वेयर अब्जॉर्ब इनटू द इनिशिएटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट गवर्नमेंट। Some of the multilingual education teachers recruited by Shiksha Sandhan were also absorbed into the initiatives of the district administration and the state government. Okay, so शिक्षा संधान हैज ट्रेन्ड एमएलई टीचर्स एंड कोच देम टू पास दिस टेस्ट। एक टेस्ट होता था हर 6 साल में उन टीचरों का, जिसको उनको पास करना पड़ता था। तो कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट दस एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन रूल इज टू सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन सच फील्ड वेयर द गवर्नमेंट इज अनेबल टू रीच एंड कम्प्लीमेंट बाई फिलिंग द गैप्स इन द गवर्नमेंट एफर्ट। मतलब एनजीओ क्या करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे गैप्स को फिल करते हैं। 10 NGO organizations role is to supplement the effort of government in such fields where the government is unable to reach and complement by filling the gaps in government effort. ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, इलूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो ट्राइबलिज्म। हमको बात करनी है अबाउट द सूडो ट्राइबलिज्म। ओके, पहले तो डिफाइन करेंगे कि सूडो ट्राइबलिज्म होता क्या है। सूडो ट्राइबलिज्म रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कास्ट क्लेमिंग द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू एंजॉय द प्रिविलेजेस और टू रिजर्वेशन बेनिफिट्स पाने के लिए। सूडो ट्राइबलिज्म refers to the concept of
non-tribal caste groups claiming scheduled tribe social status to enjoy the privilege in the fields of education, employment, and developmental activities. ओके किस किस प्रकार से जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो कैसे ट्राइबल के क्लेम्स ट्राइबल हैं बोल के कैसे क्लेम कर रहे हैं यार, है ना। ways in which non-tribals are claiming to be tribals. A community may be scheduled tribe in one state and it may be scheduled caste in another state and same may be backward class or forward class in another state and same may be backward class or forward class in another state. एग्जाम्पल के तौर पे लम्बाडास और बंजारास और सुगालिस आर they are scheduled tribes in Andhra Pradesh, but they are classified as scheduled caste in Karnataka and Union Territory of Delhi and backward class in neighboring Maharashtra. ओके अगर हम केस स्टडी की बात करें तो गोदू ऑफ एजेंसी ट्रैक्ट आर इंक्लूडिंग ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लिस्ट बट गोदवा प्लेन एरिया हु आर ट्रेडिशनली टोपी टेपर्स आर इंक्लूडिंग द बैकवर्ड क्लासेस. जो गोदू ऑफ एजेंसी ट्रैक्ट मतलब जो पास्चरल लैंड्स हैं उन एरिया के आर इंक्लूडेड scheduled tribe Goda of
plain area who are traditional Tory trappers are included as backward classes. Both communities are distinct and different. The High Court, in a writ appeal number 439 of 1980, also clearly brought out this distinction between these two communities, and Goda or Gamela people are residing in agency tract cannot be recognized as scheduled tribes. The High Court distinguish between High Court brought out distinction between these two communities, and Goda or Gamela people even residing in agency areas cannot be recognized as schedule tribe. ठीक है, लास्ट में कंक्लूड करेंगे by mentioning that unless this process of pseudo tribalism is strictly controlled, the genuine tribe cannot be developed as envisioned in the constitution. Unless this process of pseudo tribalism is strictly controlled, the genuine tribals cannot be developed as an visage ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इंट्रो देंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ continued research on cultural, anthropological, socio-economic and related issues concerning the tribes. The Ministry of Tribal Affairs recognizes the need for continued research on cultural, anthropological, socio-economic related issues concerning the tribals. The ministry also considered it important to support research on issues considering tribals. Ministry
so considered it to support research on issues concerning okay? इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं भाई? The basic objective of the scheme to strengthen the tribal research in their infrastructural needs, research and documentation activities, and capacity building programs etc. और क्या एम है भाई इसका? इसका एम है टू प्रोवाइड इनपुट टू स्टेट फॉर एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन बेसिस ऑन द रिसर्च एट फील्ड लेवल. Provide inputs to state for evidence-based planning and appropriate legislation basis on their research at field level. एंड ये क्या करते हैं? इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करें? कैपेसिटी बिल्डिंग करें फॉर ट्राइबल्स एंड द पर्सन्स एसोसिएटेड विद ट्राइबल अफेयर्स. पर्सन्स या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि ट्राइबल अफेयर के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके साथ क्या करें? कैपेसिटी बिल्डिंग करें. ये ऑब्जेक्टिव है किसका? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का. और क्या है भाई? ये फंडिंग अंडर द स्कीम इज 100% ग्रांट मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. फंडिंग अंडर दिस स्कीम इज 100% grant in aid by the Ministry of Tribal Affairs to the Tribal Research Institute on need basis. इसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे by mentioning that it is envisaged that the TRI should work as a body of knowledge and research, as a tank of tribal development and preservation of tribal cultural heritage. It is envisaged that tribal research institutes should work as
body of knowledge and research as a think tank of tribal development, preservation of tribal cultural heritage. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का 10। ये क्वेश्चन क्या है भाई? डिस्कस द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस द एंथ्रोपोलॉजिकल perspectives on the concept of ethnicity। हमको बात करनी है अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्राइमोर्डियलिज्म, है ना। यहाँ बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट for understanding of ethnicity। पहला है प्राइमोडियलिज्म और एसेंशियलिज्म। Primordialists like Clifford Gibbs argue that individuals have a single ethnic identity which is not subject to change. Primordialists like Clifford Gibbs argue that individuals have a single ethnic identity which is not subject to change. They lead to social turbulence and violence, and this lead to social turbulence and violence जो कि चेंज नहीं होता, and are dysfunctional in the development process of the society. They lead to social turbulence and violence and are dysfunctional in the development process of civil society। दूसरा है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। The constructivist theory perceives ethnic identity as a socially constructed and fluid entity that can be formed through various
means including colonization और इमिग्रेशन, है ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बोलते हैं कि एथनिक आइडेंटिटी एज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड फ्लूइड आइडेंटिटी, मतलब ये चेंज हो सकता है ना। प्राइमोडियलिस्ट ऐसा नहीं मानते थे कि वो चेंज नहीं होता है, बोल रहे थे, ठीक है। एंड मार्क्सिस्ट या फिर न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच वायलेंस बिटवीन एथनिकली एज अलाइंड ग्रुप इज रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड एलाइट एक्सप्लॉयटेशन। ये है एक प्लूरलिस्ट अप्रोच है, एक इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी है, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी क्या है भाई? ethnicity is perceived as a strategic basis for coalitions that are looking for a larger share of scarce economic or political power, and so it is a device for restricting resource to a few individual। ओके, तो हो गया इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच। वेबरियन अप्रोच भी है, 3-4 अप्रोच ठीक रहेगा, ज़्यादा अप्रोच लिखना ठीक नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टमॉर्टम क्रिटिक्स ऑफ एथनिसिटी। पोस्टमॉडर्न क्रिटिक ऑफ एथनिसिटी की लास्ट है हमारा। वेबरियन अप्रोच भी लिख सकते हैं क्या? वेबरियन अप्रोच भी लिख देंगे, ठीक है। दिस critics are of two types: scholars who call for a greater conceptual and analytical clarity is called for, है ना। scholars who argue to outright abandonment of ethnicity, ठीक है। and scholars who argue for the outright abandonment of ethnicity, ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट thus the concept of ethnicity is perceived differently by various anthropologists। देखो यहाँ पे एक और अप्रोच ले सकते हैं हम, वेबरियन अप्रोच, जिसमें क्या होता है, वेबर डिस्क्राइब करते हैं एथनिक ग्रुप एज दोज ह्यूमन ग्रुप्स दैट एंटेन्स अ सब्जेक्टिव बिलीफ इन देयर कॉमन डिसेंट। इट डज नॉट मैटर वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्टिव ब्लड रिलेशनशिप एग्जिस्ट। एक कॉमन डिसेंट है उससे। एक होता है प्लूरिस्ट अप्रोच, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स only coexist within a political unit and cannot be combined, and each group hold its own religion, language, institution,
एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ये यूनिट टेस्ट नंबर 7। अब 2 बचे हैं फुल टेस्ट जो कि हमारे पास एक जो 8 नंबर का होगा पूरा पेपर 1 का होगा, 9 नंबर का पूरा पेपर 2 का होगा।